Good morning, friends. All traders out there, welcome to the session. It's pre-opening on the markets. So let's see what lies ahead. And as we said, a plan for the day to be better prepared, better informed, and take informed trading decisions. We have to follow or have a look at certain key data, which is on the indices, VIX. Let's go to our substacks and let's see what global indices are doing. So first thing I would like to start is my global indices. So yesterday the US market S&P and Dow both closed flat. Uh, yeah, hi Deity trader, good morning. Both closed flat, right? So not much clue from the global markets. The US futures right now, if you see, let me go to the futures tab. Yeah, futures are more or less red, but I would call it flat or 60 points. No, it's plus 100 points. So no big movements out there in the global markets. Bovespa, keep a watch on it. It's a metal index, is up. Rest, Nikkei is down 540 points. Your Hang Seng is also down. Right. So global markets, no big movers out there. It's as quiet as we are witnessing it for the last few days. After that, let's go to our markets. So that's Nifty, and निफ्टी में क्या हो रहा है एक इसको हम कॉइलिंग प्राइस एक्शन बोलते हैं. कॉइलिंग प्राइस एक्शन मतलब भाव तो ऊपर जा रहा है बट जो कैंडल्स का रेंज है बहुत नैरो. एंड कॉइलिंग प्राइस एक्शन में आपको एक काम करना है, एक सारे हाइस को कनेक्ट कर देना है और लोस को कनेक्ट कर देना है, लाइक दिस. सो एक बार ऐसा कॉइल मिलता है, दैट मीन्स बाउंड्रीज डिफाइंड रहता है अपसाइड एंड डाउन साइड. और such coils are very notorious, which means that if it breaks on the downside we might see a dip. Okay, it will be more clear अगर आप hourly charts पे चले जाओ to plan for the day. That's how the coil is looking like last 3 days, right? And this is where the big gap up opening was at or around the all time high. निफ्टी ने अभी तक ये क्रॉस नहीं किया. इट्स स्ट्रगलिंग अराउंड दोज लेवल्स. देयर इज अ क्लियर लॉस ऑफ मोमेंटम एंड ये लेवल आप मार्क करके रख दो, which is 26,300. Looks tough. I don't think it will come into play for today's trading. It's far away. So let's just focus on levels which are relevant for the trading. So even if I see this, एक बार आपको रेंज मिलता है. Once you get a range, just define the range. Right? So the range is so narrow, so compact, and so defined that nothing happened yesterday. Market सिर्फ एक ही भाव पे खड़ा था, plus or minus 50 points here and there. And this is something which is very characteristics of a coiling price action. So as a trader, wait out for a break. See, market is tired overbought. अगर upside break हुआ तो it might not be a very strong one. If it breaks downside, the dip might be a sharp one. ये आप ध्यान रखो because market से tired लग रहा है. Why we are saying tired is if I now take you back to the daily charts. और ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखने के लिए हमारे पास बोलिंगर बैंड्स का एक टूल है. तो अभी आप देखिए मोर और लेस another 100 points up and market is extremely overbought. So keep a watch on this range. ये range define करके रख दो आप अपने trading terminal में on stock or trading view platform. Just define this range. Right? कल का भी जो बेस बना था वो ये रेंज के लोज पे ही था. तो एक बार अगर कोई भी लो हिट कर रहा है और कल जो ओपनिंग का हाई था वो भी ये रेंज के आसपास था, तो एक रेंज क्लियरली डिफाइंड है. Just focus on this range and see which side it is breaking. Right? और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के रहते हैं वो ऑलवेज हाई पे रहता है. सो आई जस्ट शो यू हाउ टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस.
ये जो हाई का कैंडल है उसका आपको बॉडी लेना, टेक दिस बॉडी, दिस इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस. अबव दैट हम ओआई का रेफरेंस लेंगे विच इज और बोलिंगर बैंड्स विच इज 26,060. सो 26,000 क्रॉस भी किया तो भी 50 ऑड पॉइंट्स का एक स्पाइक है. ऑन द डाउन साइड दिस बेस इटसेल्फ इज अ सपोर्ट, देखते कौन से साइड टूटता है. एंड दिस बेस ओवर हियर, यहाँ पे गैप से मार्केट खुला था, तो गैप ऑलवेज फिल करने आते हैं मार्केट इफ इट्स नॉट ब्रेकिंग ऑन द अपसाइड. सो दिस लुक्स द सेटअप फॉर मी. एंड ऊपर में आई जस्ट पुट द डेली बोलिंगर बैंड जो एक रेफरेंस पॉइंट है, अगर ब्रेक हुआ तो कितना ऊपर है, बहुत ऊपर भी नहीं है. फाइन. So this is how the Nifty looks like for a day trading perspective on a 15 minutes time frame. Now let's go to Bank Nifty. See, Bank Nifty में एक particular strength दिखने मिल रहा है. Still, if you remember yesterday in the pre-open, what we said is कि inside day है. यहाँ पे भी inside day था. ये dip किया, there was a sharp recovery. वो जो पैटर्न्स हम लोग बोलते हैं, दे आर रिपीटेटिव इन नेचर. सेम थिंग हैपेंड. ये थोड़ा एक शार्प डिप आया एंड इट रिकवर्ड फॉर द डे. सो क्लोजिंग वाज अराउंड द डेज नोट. सो आज भी एक हैमर कैंडल बना एंड दिस वाज अ हैमर. ये भी एक हैमर कैंडल था. अगर आपको इंडिविजुअल कैंडल के बारे में और जानना है, सीखना है, तो कल हमारा एक सेशन है ऑन सिंगल कैंडल पैटर्न्स. मेक श्योर यू गो टू द stock.in वेबसाइट एंड रजिस्टर फॉर द वेबिनार. एंड दिस प्राइस एक्शन, इसको हम एक फॉलिंग चैनल बोलते हैं, जो कि अगर ऊपर टूटा तो एक माहौल बन जाता फॉर अ स्पाइक ऑन द अपसाइड. So that's how Bank Nifty is. एक बार 3 दिन का रेंज एस्टैब्लिश्ड हो जाता है तो आपको 3 डेज का लो का सपोर्ट मानना. 1 2 3, ये सपोर्ट टूटा नहीं. 1 2 3, I'll take this low. Fine. तो बेसेस आर शिफ्टिंग हायर बट एट द सेम टाइम मूवमेंट्स नहीं आ रहे. So that's how Bank Nifty is. With this low as a support, plan your strategies, and with this high as a resistance, plan your strategy. So levels are very known to it. It's likely to stay within this range. और जो intraday volatility है, that has surface volatility तो मैं नहीं बोलूँगा. It's more of a choppiness, dips and then a pullbacks. So बैंक निफ्टी अभी हम डेली चार्ट्स पे देखते हैं. इफ यू वॉच इट ऑन अ डेली चार्ट्स फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी भी ओवरबॉट तो हो रहा है, अभी क्या यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, तो द बोलिंगर बैंड ऑन द 61,000 लेवल इज मेकिंग इट ओवरबॉट. फाइन. सो कोई भी अगर इफ आई गेट अ रेफरेंस लेवल विच हेल्प्स मी इन टेकिंग अ इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस, ऑलवेज एज अ ट्रेडर मार्क लाइन्स ओवर देयर. So this will be your Bank Nifty range. Plan your strategies, whether it's options or anything, according to these levels. Once it breaks this, fine, नीचे में बहुत सपोर्ट है, ये गैप का सपोर्ट है. फाइन. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. कल का डिप आया एंड इट पुश्ड अप. सो द कॉलिंग प्राइस एक्शन फॉर निफ्टी is showing a certain degree of weakness, but at the same time, why? Because Bank Nifty में आपका IT index है, there's a components of FMCG and all, so they are pulling Bank Nifty down. But at the same time, if you see on the Bank Nifty side, they are pulling Nifty down. Pardon me on that. On the Bank Nifty side, the closing it's giving is on a positive note, but still it's not showing any big breakout on the upside or on the downside, where intraday choppiness is likely to continue till a clear swing emerges. Abhi ka swing we should label it as a sideways. Right? So that's Nifty. और एक बार आप विक्स रोज देख लो. इंडिया विक्स इज अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स. सो इवन ऑन द विक्स साइड इफ यू सी, विक्स में भी एक साइडवेज रेंज आ गया. एंड मार्केट्स आर विक्स आर इनवर्सली रिलेटेड. जब विक्स ऊपर गया मार्केट केम डाउन. नाउ विक्स केम डाउन, market went up. So VIX and markets are inversely related. So let me remove it. VIX का भी एक fixed range है. For the last 1 2 3 4 5 days, ये decline halted at this point. So we can call this as a range. So VIX भी range में है.
So, which is saying a choppy range bound market. Let's for traders wait out for a directional move. So, it's a day traders delight market, option sellers delight market as of yesterday. Let's see what happens today. The levels and alls we have marked for you. Fine. So, it's a tired market, and let's go. That's VIX, and let's go and check what the gift nifty is doing. गिफ्ट निफ्टी एक रेफरेंस पॉइंट है बहुत वी आर नॉट टू मच ग्लूड ऑन टू इट राइट सो गिफ्ट निफ्टी इज ओपनिंग अगर आप देखो इसका अभी on a daily time it's flat plus 0.5 so gift nifty is flat so which is suggesting that the sideways price action in nifty is holding and the range is clearly established. Let's side which side it breaks. So there is very little market has to offer for the momentum traders for the last 3 days. It's all about intraday gyrations, intraday choppiness बोल सकते हैं. And that's how markets are continuing. Yeah, good morning, Mr. Chaudhary. Right. So now, if you want more details notes, see हम जो भी discuss करते हैं, I write a detailed technical note, so everybody can go to the Stocko Incred Money Substack page. So I'll take you to our Substack page. Make sure you are registered there. It's for you only. Whatever we are discussing, based on that, we write a detail. So this is for today. So you can see coilish price action, lack of momentum in the markets. Fine. How many of you have got into the habit of looking the technical note on the Substack? Give me either a yes or a no. So open interest buildup is also there. All the averages are there. So it also adds to the pre-opening sessions which we are doing. So okay, I'm getting lots of yes. Yeah. So if you want, I'll just send you the link. This is the Stocko Incred Money on the trading part of it. Or we write daily the daily notes and the weekly notes. So I'll put the link over here in the chat window. Somebody who's watching the session at a later time, make sure you go and have a look at it. If you find it's helping you in your trading, subscribe it. It's free. So that's market. Choppy sideways coiling. Intraday dips and intraday spikes will continue. Net it's a range. And such compact range जो रहती है ना they don't last for more than 3 to 4 days. Already 3 days are there. Either it should break on the upside or on the downside. Maximum a short term swing is we label it as 3 to 5 days. Nothing more than that. So before I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. Right? So that's the disclaimer. Investment in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing, and brokerage will not exceed the SEBI prescribed limit. So that's from my side, friends. Again, we are going to meet at 3:45 and see the post market what's happened based on what we had seen right now. And let's meet again at 3:45. And tomorrow we have a session on or a webinar on single candle patterns. Thanks. Have a nice day.